Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture में we had discussed about the introduction of the chapter of anatomy of flowering plants, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था एंड उसमें ये देखा था कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ have an ability of division, and that capability of meristematic activities of division is actually responsible for forming primary plant body और वो secondary growth के लिए भी responsible होता है. So आज इस lecture में we'll be discussing about the second category of tissues which are the permanent tissues. Now permanent tissues के बारे में कल previous lecture में हम लोगों ने थोड़ा सा एक brief introduction लिया था, and that brief introduction was कि दो तरीके के ये होते हैं, simple permanent tissues and complex permanent tissues, and these permanent tissues they actually arise from meristematic tissues. ये meristematic tissues से ही आते हैं, and these tissues they actually lost the capability of division. इनमें division की जो ability होती है वो loss हो जाती है and are mature enough to perform a specific function. ये एक specific function को perform करते हैं. So one by one we'll be dealing with the categories of permanent tissues. तो सबसे पहले हम simple permanent tissues और उसके categories को study करेंगे. Now as earlier मैंने बोला था कि ये simple permanent tissues वो tissues होते हैं which are made up of only one types of cells. तो ये सिर्फ एक तरीके के cells का बना होता है and ये basically तीन portions में divided होती है, तीन types में actually divided होते हैं, and those are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So ये तीन तरीके के होते हैं which is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So एक एक करके we'll first be dealing with the parenchyma part and then collenchyma and then sclerenchyma. Now ये जो parenchyma या जो parenchymatous cells होते हैं, these are more or less like ये ऐसे cells होते हैं which are mainly found in the mature or we can say कि most of the regions जो होते हैं plant body के, these cells are mostly found in the most of the or major portions of the organs of the plant body, and ये basically जिस तरीके से ये देख सकते हैं हम लोग, this is actually made up of very thin cells. ये thin cells का बना होता है and इनके जो cells होते हैं, these cells are actually looking like oval or spherical or polygonal shape के ये होते हैं. So they are more or less like oval, spherical or polygonal in shape, and सेल वॉल्स इनका थिन होता है जो कि मेनली सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का इनका कॉम्पोजिशन होता है, एंड दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन देम. दीज डॉट्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोप्लास्ट part. So since they have the presence of chloroplast in them, so their main function is the ability of photosynthesis, storage and secretion. तो ये photosynthesis भी कराते हैं, photosynthesis से जो food product बनता है उसको store करते हैं, and are ultimately responsible for secreting them to various parts of the plant body. तो ये major portions में constitute करते हैं, and क्योंकि इसमें दिख सकता है कि since these cells they are loosely packed, क्योंकि इनके cells loosely packed होते हैं, that's why ये बीच बीच में कहीं ना कहीं intercellular spaces are observed. So they have the presence of intercellular spaces in between because the cells are actually loosely packed. All right. So these are the key features of parenchymatous cells, which is one of the type of simple permanent tissue. तो इसमें features में ये हो जाएगा कि these cells they occur in major organs of the plant body. Shape में they can be either oval, spherical, polygonal or isodiametric in shape. Cell walls are thin and made of cellulose. Cells are loosely packed, so intercellular spaces are present between the cells क्योंकि loosely packed होते हैं, so intercellular spaces इसमें दिखता है. And cells contain chloroplast, so performs the function of photosynthesis, storage and secretion. So this was about parenchyma. The next cell or the next type which we'll be dealing with is collenchyma. So this is the diagrammatic representation of the sclerenchymatous cells which we are seeing here. इसमें हमें इसके अगर हम सेल वॉल को देखें, सो जो बेसिक डिफरेंसेस जो हमें पेरेंकाइमेटस सेल से हमें इसमें मिलता है वो हो जाएगा, इसका सबसे पहला बेसिक डिफरेंस इज़ कि वो मेजर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी में पाया जाता है, दैट पेरेंकाइमेटस सेल्स. एंड ये जो कोलेनकाइमा होता है या कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन द डाइकॉट प्लांट. एपिडर्मिस इज अ सिंगल
सेल्स जो कि एकदम एक्सटीरियर टू द प्लांट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी में पाया जाता है. सो बिलो द एपिडर्मिस दिस टिश्यूज आर फाउंड विच आर द कोलिनकाइमेटस टिश्यूज. एंड उस पेरेन्काइमा के सेल्स जो थे दे वो थिन एंड वो सेल्यूलोज के बने थे. वाइल हियर वी कैन सी द जो सेल वॉल होता है इनका काफ़ी सेल वॉल थिक है. एंड दीज थिकनिंग जो होती है सेल वॉल में इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिपोजिशंस ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टीन. सो कॉर्नर्स में इनकी थिकनिंग जो होती है जो ब्लू लाइन से या ब्लू मार्कर से हमें दिख रहा है. सो दीज थिकनिंग्स आर एक्चुअली बिकॉज of the presence of, or thickened corners is actually because of the presence of cellulose, hemicellulose and pectin. Now regarding the shape is more or less उन्हीं की तरह होता है. It's oval, spherical और polygonal और hexagonal shape का ये होता है. एंड इनके फंक्शंस क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट इनमें भी पाया जाता है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ये भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कराते हैं एंड फूड को का स्टोरेज कराते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज सेल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यंग स्टेम हो गया या यंग लीफ हो गया या यंग पीटियोल हो गए लीफ के उनको. ऑलराइट, सो विल बी राइटिंग डाउन दी फीचर्स ऑफ कोलिनकाइमा. So these are the features of कोलिनकाइमा. These cells are found below the epidermis of dicot plants. The shape can be oval, spherical or polygonal shape. Cell walls जो होते हैं वो thick होते हैं and are thickened and have thickened corners because of the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Cells also contains chloroplast and so performs the function of photosynthesis. And the function is that they provide mechanical support to growing parts of plants like young leaves and petiole of stem. So this was about कोलिनकाइमा. The next we'll be dealing with is sclerenchyma. So sclerenchyma के जो cells होते हैं, these sclerenchymatous cells they are of ये actually dead cells होते हैं जो कि dead without any kind of protoplasm ये present होते हैं. On the other hand मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो parenchyma and कोलिनकाइमा जो cells होते हैं these are both living cells. तो ये दोनों के दोनों ही living cells आते हैं and living cells होते हैं. This is also living cell, but sclerenchyma जो होते हैं these are dead cells. Alright, क्योंकि ये दोनों के दोनों living function of photosynthesis, metabolic activity which is photosynthesis को perform करते हैं and that's why they are considered to be as the living cell and ये dead cells होते हैं. These are dead cells and are made of thick and lignified cell walls. ये दो तरीके का होता है on the basis of origin and development. This can be either long, elongated tube-like structure की तरह हो सकता है, long, narrow, elongated tube-like structure having a very wide cavity which is called lumen. And on the other hand, it can be either in the form of oval spherical in shape. एक oval spherical shape का भी हो सकता है which is called sclerid. And this sclerid has the presence of narrow lumen or cavity along with the presence of pits. तो ये इनका features हो जाएगा. So these are the features of sclerenchymatous cells. ये fibers and sclerid इसी के type हैं. These are dead cells without protoplasm and made of thick lignified cell walls. दो तरीके का होता है on the basis of origin and development. It can be either fibers which are long elongated cells with wide cavities or lumen. इसमें wide cavity और lumen होती है. On the other hand, sclerids जो होते हैं these are oval or spherical having narrow cavities or lumen. These cells are particularly found in the fruit wall of nuts, pulp of fruits like guava, pear and sapota, seed coat of legumes and in tea leaves. And the main and important function of these cells is to just provide the mechanical strength to plant body. So this was about the simple permanent tissues, the three types of the simple permanent tissues that we have dealt today in this lecture. और ये हमारा simple permanent tissues के portions को ख़त्म करता है, finish करता है. In the next lecture we'll be discussing about the complex permanent tissues and its टाइप्स कि कितने तरीके के होते हैं, उनका क्या मेजर फंक्शंस या क्या रोल होता है या क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है प्लांट बॉडी में इन द पोर्शंस इन विच दे आर फाउंड. थैंक यू.